Good morning, class 3. Take out your EVS book. Today we will revise chapter number 23, Heavenly Bodies, page number 128 for our final exams. We have already revised this chapter, Caring for an Environment. We have also done the test work of this chapter. Now we will revise this chapter and tomorrow we will conduct a test for it. Take out page number 128. So this is just a revision class. We have already done this chapter thoroughly. We have done its one word, middle question answers, everything we have done. We have done practical also for this chapter. Now we will do just a revision work. Now what is a heavenly body? Everything that you see in the sky, everything that you can see in the sky, whether those are stars, the moon, the sun, everything is a heavenly body. Okay. So what is a star? If you see in the sky, you see that some objects are there in the sky that twinkle. Those little objects that twinkle in the sky are known as stars. Whereas there are some objects that do not twinkle. They may be planet. It means stars have their own light, but planets do not have their own light. Stars have their own light, but planets do not have their own light. So, where do planets get light from? Planets get light from the sun. This is the sun. He is the father of the family, the main member of the family. And there are 8 planets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 planets that are revolving around the sun in a fixed path, which is known as its orbit. So, the first planet is Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. We are at number 3 from the sun, and Jupiter is the biggest planet of solar system. All the planets do not have their own light. किसी के पास भी अपनी light नहीं है. So where do they get light from? They get light from sun. They keep on revolving around the sun on their fixed path, and this fixed path is known as orbit. The first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are known as inner planets. And the last 4 planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are known as outer planets. Earlier, there were 9 planets. पहले एक और planet हुआ करता था जिसका नाम था Pluto. Then it was too small to be known as a planet, so it was considered as a dwarf planet. उसका नाम क्या पड़ गया? Dwarf planet, मतलब बहुत छोटा planet. Okay, what is the name of the planet on which we live? We live on this planet. This is Earth. Earth is blue in color because it has a lot of water. It rotates on an imaginary line which is known as axis. Because of its rotation, we can see day and night. And because of its revolution around the sun, we can see years changing. We can see the change in seasons. Okay. So we live on Earth, and it is one of the 8 planets of solar system, and it is the only planet in solar system where life exists. Earth has a layer of air around it. उसके आसपास क्या है? हवा है. तो उस हवा के लेयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. When the Earth rotates on its axis, it is known as rotation. The Earth goes on its axis in 24 hours, जिससे day and night होता है. Earth also moves around the sun, which is called revolution, and Earth takes 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. Okay? Then we will study about sun. Sun is a star. Sun is also a star, and do you know there are some stars जो हमें stars दिखते हैं रात को twinkle करते हैं, वो sun से भी बड़े होते हैं, पर वो हमें इतने छोटे क्यों दिखते हैं? Because they are very 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 far away from us. So sun is also a star, and it is a huge ball of hot gases, and the temperature there is very very high. Okay, sun हमें छोटा क्यों दिखता है? बहुत बड़ा है sun. छोटा इसलिए दिखता है because it is very far away from us. Otherwise the sun is very big. Then if you see, this is a sun. sun के आसपास कौन घूम रहा है? हमारा planet Earth. जैसे अर्थ सन के आसपास घूमती है, वैसे ही अर्थ के आसपास कौन घूमता है? अर्थ की सैटेलाइट. और अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट, मून.
Moon is the natural satellite of Earth. So everything that revolves around a planet, जो सन के आसपास घूम रहे हैं वो प्लैनेट है, और जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं वो होते हैं सैटेलाइट. तो प्लैनेट के आसपास, अर्थ के आसपास कौन घूमता है? मून. इट मीन्स मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट. And moon also does not have its own light. It gets light from the sun. अब आपको जो मून दिखता होगा रात को, कभी कभी दिखता ही नहीं होगा, कभी पूरा दिखता होगा, कभी आधा दिखता होगा, कभी आधे से कम दिखता होगा, कभी आधे से ज्यादा भी दिखता होगा. ये जो अलग अलग फेसेस होते हैं मून की, अलग अलग शेप्स होती है मून की, उसी को हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फेसेस ऑफ द मून. जिस दिन हमें कोई भी मून नहीं दिखता, मून दिखता ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे. और जिस दिन हमें पूरा मून दिखता है उसे हम बोलते हैं फुल मून डे. ओके, देन वी स्टडी अबाउट स्टार्स. देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड दे रिमेन फिक्स्ड एट देयर प्लेस. दे हैव देयर ओन लाइट and they twinkle in the sky. They have their own light and they are very very far away from us. That is why they look so small. There are stars that form groups. स्टार्स क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं. उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं क्लस्टर. क्या बोलते हैं? क्लस्टर. और कुछ क्लस्टर मिलके कोई पैटर्न बना लेते हैं. पैटर्न मतलब कोई शेप बना लेते हैं. उन शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. व्हाट डू वी कॉल देम? ग्रुप ऑफ स्टार्स that form a shape, that form a pattern. It is known as a constellation, like Saptarishi, Leo, Scorpion, Orion. These are some of the names of constellation. Now the last topic is galaxy. I told you when we were reading that if you look at the sky, towards the sky from your telescope, then you will see white milky thing in the sky. आपको क्या दिखेगा? सब कुछ whitish ऐसा दिखेगा. ये क्या है? ये है हमारी गैलेक्सी, जिसमें सब कुछ आता है, एवरीथिंग. ये पूरा बैंड ऑफ स्टार्स, दिस इज नोन एज गैलेक्सी. क्योंकि हमें ये टेलीस्कोप से दिखने में कैसी लगती है? वाइट लगती है. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज द बैंड लुक्स लाइक अ मिल्की वाइट क्लाउड ऑफ स्टार्स. This is why the name of our galaxy is Milky Way Galaxy. What is the name of our galaxy? The name of our galaxy is Milky Way Galaxy. ओके, इसी गैलेक्सी में सब आता है. सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, सो व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सन एंड ऑल द हेवनली बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम. स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट. सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट किसके आसपास घूमते हैं? सन के आसपास. और प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट. 8 प्लैनेट में से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है. अर्थ की सैटेलाइट कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट मून. वो हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के आसपास घूमती है उसे क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. और गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. सो देयर वी हैव कंप्लीटेड आवर रिविजन वर्क चिल्ड्रन. Tomorrow I am going to take your test of this chapter, in which I am going to ask you questions from the middle of the chapter, from the back exercise, and from the notebook work, whether those are question answers or one word question answers or anything, any activity, whatever we have done related to this chapter, that I am going to take your test tomorrow. So you have to prepare the chapter very hard and very properly. Read each and every line properly. If there is any confusion, you can come to the school between 10 a.m. to 1 p.m. to solve your query and attend the query session and revise the chapter properly for your final exams. Bye and take care.